Hey guys, what's up? So, from my previous video about I am Code, many people reached out for interview tips, and once their interview was done, लोग पूछना चालू करते कि रिजल्ट कब आएगा, कितना वेट करना पड़ेगा. अब जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्या करे? प्री स्कूल शुरू होने से पहले कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या? And so on and so forth. So, I have completed my first year of MBA while I am making this video. And just a year before, I was in your shoes, so I exactly know how it feels. Here are a few things you can do before your B school starts. But before that, please make sure to like and subscribe. और अकेले अकेले ही सारा ज्ञान मत लो, share it with your friends as well. Now, first of all, know that कोई भी B school मिला हो, भले उसका जो भी रैंक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Congratulations to you for making it there. You have earned it. Feel proud about it. Because you know कितने लोग वो एक सीट के पीछे पड़े थे. Now, which B school to choose over which is a different matter altogether. Let me know in the comment section if you want me to make a separate video weighing out the pros and cons of different B schools. Next, जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, बहुत से लोग बोलेंगे ये कर लो, ये पढ़ दो, आगे जाके काम आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. For the matter of fact, your parents would be like do this and do that, but I would say हटाओ ये सब, कोई अच्छी जगह जाओ, घूम लो अच्छे से, spend time with your family, friends, girlfriend, boyfriend, anybody, because ये टाइम वापस नहीं आने वाला, trust me. You have worked hard to reach this stage, and now the next stage is going to be grabbing a good internship. The moment you enter the B school, drilling start हो जाएगा. And trust me when I say this, first term बहुत ज़्यादा hectic होने वाला है. You'll be having your CV making sessions, HR questions prepare करने होंगे. Then there will be your committee elections. वो committee elections के लिए you'll have to perform a few tasks and everything. Then internship preparation sessions होंगे, and obviously ये सब चीज़ों के साथ तुम्हारे normal lectures होने ही वाले हैं. All these things together makes your first term super hectic. But then हाँ, इतना भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अभी से. लोग बोलते हैं कि सिर्फ 2-3 घंटे सोने मिलता है, वैसा कुछ नहीं है. ट्रस्ट मी, सब थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड है. You can make time for a good 5-6 hours sleep. हाँ, लेकिन जैसे इंटरव्यूज पास आते जाएंगे थोड़ा सा कम सोने मिलेगा. बट ठीक है, it's nothing to worry, cause see, you're not alone, or you're not going to be alone in this process. There are 400-500 odd students along with you in the same process. So अच्छे से सब चीज़ें हो जाती है. People are understanding. लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं. So these are the things you shouldn't worry about exactly. And see, this is exactly why I recommend कि B school start होने के पहले अच्छे से घूम लो. Have some me time for yourself, or do whatever you want to. Now, obviously सारा टाइम घूमने में मत निकाल देना. थोड़ा सा टाइम निकाल के these are the few things you can do. First, try finding out more about your college. There are hundreds of videos on YouTube. Another thing you can do is connect with your alums or seniors through LinkedIn. Just search for your B school and you'll find a list of people from that particular school. Like for example, I am from IIM Code. I will search for IIM Code on LinkedIn and add people, leave them a message and try building conversations. Try finding any detail you want about the institution from them, and maybe you can even try looking for an alum or a senior जो वही B school का भी हो and तुम्हारे UG या फिर तुम्हारे company में भी काम कर चुका हो. So this will help you build connections faster and in a much easier manner. Now, number 2 and most importantly, if you do not have a LinkedIn account, make one at the very first moment and try getting 500 plus connections from now. See, this is very important because जो placement committee है वो तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है कि 500 कनेक्शन से ऊपर लेके आओ कैसे भी करके. एंड वो टाइम पे जब चीज़ें ज़्यादा हेक्टिक हो तभी ये सब करने से अच्छा इट्स बेटर यू जस्ट डू इट राइट नाउ. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड पीपल डेली, बिकॉज उस पर लिंक्डइन पे भी कुछ डेली लिमिट है कि दिन में सिर्फ इतने लोग ऐड कर सकते हो एंड ऑल. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू पोस्ट अबाउट द बी स्कूल यू गेट इनटू.
इससे भी एक अच्छी खासी रीच मिल जाती है एंड तुम्हारा लिंक्डइन खाली खाली भी नहीं लगेगा. एंड if you do not know how to make a LinkedIn account, there are tons of videos available on YouTube. Just check it out. The third thing you can do is थोड़े बहुत courses कर लो, preferably in the field you want to intern, or maybe you can diversify them as well, because internship process इतना random है कि तुम्हें भी नहीं समझेगा कौन सा कंपनी कब तुम्हें आके सिलेक्ट करके लेके जाएगा. See, I don't know about other B schools, but I am Kozhikode had made it compulsory to do a few courses within a stipulated amount of time. अब वो टाइम पे चीज़ें और ज़्यादा हेक्टिक करने से अच्छा इट्स बेटर यू गेट इट डन राइट नाउ. एंड I would suggest 3 to 4 courses is more than enough. Of course, there is no stopping, or no one is stopping you from learning more. You can do more courses as well. Number 4, I have seen many CFA aspirants prepare for their CFA exam in the first term itself. अब वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. So I would suggest if you have plans of giving CFA by first term and or somewhere around that time, it's better you start preparing abhi se. Number 5. See, now making a CV is going to consume a lot of time. There will be multiple rounds of CV making, at least 7 to 8 as far as I remember. So it's better if you start just gathering all your points in one word file. No need to properly frame it from now, but then just jot them down ताकि जब तुम्हें CV बनानी हो, जब तुम्हें वो पर्टिकुलर पॉइंट एक हेडर के अंदर डालना हो, सो रिमेंबरिंग इट और जस्ट कलेक्टिंग इट बिकम्स मच सिंपलर रादर देन वो टाइम पे सोचो कि हाँ मैंने ये स्टैंडर्ड में ये किया था या मैंने ये साल में ये किया था वगैरह वगैरह, इसमें मैं ये डाल सकता. सो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर तुम्हारे CV पॉइंट्स पहले से ही लिखे हुए होते हैं. एंड योर अंडरग्रेड CVs एंड दी CVs आर वेरी वेरी डिफरेंट. तो ये मत सोचना कि मेरा CV तो ऑलरेडी रेडी है. Just start jotting down points. It will help you a lot in your future. Now you also need to get proofs for your CV points. Start thinking abhi se कि कैसे लाओगे वो proofs. Reach out to people or authorities who are going to approve your proofs और उन्हें बोल के रखो कि आगे मुझे ये ज़रूरत होने वाली है. Maintain good relations with them. Like for example, work experience के proof के लिए तुम्हें तुम्हारे बॉस या किसी सीनियर का अप्रूवल लगेगा. पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुए या तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स हुए, ये सब चीज़ों के लिए यू नीड अप्रूवल फ्रॉम योर कॉलेज प्रोफेसर्स. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है. एंड में फॉर वेरीफाइंग अ CV पॉइंट मेरी स्कूल ने, लाइक माई 10th स्टैंडर्ड, मेरी स्कूल ने बहुत नाटक किया था. एंड सो एंड में सिचुएशन को ज़्यादा क्योटिक बनाने से अच्छा इट्स बेटर यू गेट इट डन राइट नाउ. ऐसे कि CV प्रूफ्स के बारे में बात करके रखो, आई डू नॉट मीन कि तुम CV प्रूफ्स अभी से लेके रखो, बिकॉज तुम्हारे CV में इतने करेक्शंस होंगे कि तुम्हारे एंड में वो सेंटेंस बहुत डिफरेंट बनने वाला है. सो द CV प्रूफ विच यू नीड इज फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. तो अभी से प्रूफ लाके कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हें वापस वो पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए लाना ही पड़ेगा. सो इट्स बेटर यू जस्ट टेल द अथॉरिटीज़ कि मुझे अभी आपकी मदद लगने वाली है आगे प्रूफ्स वो सब के लिए. एंड आगे जब भी प्रूफ की ज़रूरत हो तभी यू जस्ट मेल देम एंड टेक अ मेल अप्रूवल और अ रिटन अप्रूवल, वॉट एवर इट इज़. वन मोर थिंग दैट कैन बी डन इज स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, कॉलेज के फर्स्ट टर्म में ही फिनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आने वाला है. आई हैव सीन मेनी इंजीनियर्स क्राई अबाउट दिस. मेरा थोड़ा सॉर्टेड था बिकॉज माई फादर इज अ CA, सो उनसे बहुत ज़्यादा गालियाँ खा के मेरी अकाउंटिंग अच्छी हुई थी before my MBA started. So I would advise कि B school start होने के पहले थोड़ा सा पढ़ लो इस पे, कुछ YouTube पे वीडियोज़ या कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें. The number 8 thing, and this is exclusively for freshers, you need to have something to compensate for the lack of work experience in your CV. Hands down, internship is the best substitute. Try grabbing an internship in a relatable field, or if that is not possible, then try doing a few courses. Number 9, this is for everyone, brush up your Excel and PPT skills. This is very very important because तुम्हें आगे जाके MBA के 2 साल Excel और PPT पे ही काम होने वाला है. Even in your job you're going to use your Excel and PPT, so just brush up on your skills. So lastly, this is exclusively for people having a work experience. So if you are yet working, get your leaving sorted.
The moment you convert and decide to join a particular B school, inform your superiors or your boss and sort the resignation process. This is very important because I have seen a few friends work in the starting few days of a B school, and then it's very much hurtful and becomes बहुत 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 ज़्यादा stressful. In fact, B schools want you to sort and leave working before the lectures start. वो तुम्हें allow ही नहीं करेंगे sitting for lectures until and unless your working like until and unless your working period is over.